Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome in your English Oxford Reading Circle class. Today we are going to complete our story number 18, Why the Sea is Salty. One day a ship's captain came to the farm. He wanted to see the mill. He asked, "Can it grind salt?" "Grind salt?" said John. "Yes, it can grind anything." When the captain heard that, he said he must have the mill, whatever the cost. With it, he would never again have to cross the stormy sea to collect salt. At first, John wouldn't sell it. The captain begged and pleaded so hard that at last John agreed. But only when the captain had paid him many thousands of silver pieces. The captain took the mill and left quickly before John could change his mind. He had no time to ask how to handle the mill. He got on board his ship as fast as he could. He set sail. When he had sailed a good way off, he brought the mill on the deck. "Grind salt," he said. The mill began to grind salt, and it poured out in a stream until the ship was full. The captain wished to stop the mill, but whichever way he turned it, and however much he tried, it was no good. The mill kept grinding on, and the heap of salt grew and grew until the ship was sunk. To this day, the mill lies at the bottom of the sea and grinds away, and that's why the sea is salty. एक दिन एक जहाज़ का कप्तान उस फार्म में गया। वो ये मिल देखना चाहता था। उसने पूछा, "क्या ये चक्की नमक पी सकती है?" जॉन ने कहा, "ये हर चीज़ पी सकती है।" तो जब कैप्टन ने वो सुना, उसने कहा, "ये चक्की तो उसे चाहिए, चाहे इसकी कितनी भी कीमत हो। जब ये चक्की उसके साथ होगी तो उसे समंदर के तूफ़ानों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।" उस कैप्टन का काम ये था कि वो जगह जगह जाता था और नमक तलाश करता था। पहले तो जॉन उसे बेचना नहीं चाहता था। कैप्टन ने उसकी बहुत मिन्नतें की। जॉन आखिर राज़ी हो गया उसे बेचने के लिए। पर तब जब कैप्टन उसे हज़ारों पीसेस सिल्वर के न दे दे, कैप्टन ने वो चक्की उठाई और जल्दी जल्दी से वहाँ से निकला। इससे पहले कि जॉन अपना माइंड चेंज कर ले, उसे इतना भी टाइम ना मिला कि वो उसे पूछे कि चक्की को कैसे हैंडल किया जाता है। वो उसे अपने जहाज़ में लेकर आया और जहाज़ में बैठ गया। जब वो काफ़ी दूर निकल आया तो उसने चक्की को डेक पर रखा और उस चक्की को कहा, "ग्राइंड सॉल्ट," नमक पीसो। तो चक्की ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। चक्की ने इतना नमक पीसा कि वो सारी शिप फुल हो गई और नमक नदी की तरफ बहने लगा। अब कैप्टन चाहता था कि वो चक्की बंद हो जाए। उसने उस चक्की को जितना भी घुमाया, कितनी भी कोशिश की, कोई फ़ायदा ना हुआ। चक्की चलती रही, नमक बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो शिप डूब गई। इस दिन से वो चक्की समंदर की तह में बैठ गई और वो आज भी उसी तरह चल रही है। इसीलिए समंदर का पानी खारा होता है। Dear student, your homework is you have to read ORC book page number 132 to 134 and also complete exercise C. Send your reading and homework in WhatsApp group. Hope you understand. Good luck. Allah Hafiz.